Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome and today is Thursday at 4 क्योंकि आज RBI policy थी, market में movement था and I thought instead of doing Friday at 4, I'll do Thursday at 4 and tomorrow I am having an event which is there with Phillip Capital. I'm speaking with them on the markets and that's why we did Thursday at 4. So before I move on, I would like to know how are you doing, and it's a very warm welcome, very good evening, Akash. Great to see you here. I keep checking your Twitter. Great to see Amit and all the mentees also are here. Anjali, Anup, Gaurav, Uday. Great to see you. And आज का market movement was simply crazy, right? In either direction, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर लगा ऊपर जाएगा, फिर लगा नीचे जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया, वो रेंज में ही फंसा रह गया. The levels which I keep which I mentioned in the morning, and that levels worked very well. Nifty did not break the support of 19,490, did not break above that level of 19,640. It was just stuck in a range. ये जो webinar आप देख रहे हैं, this webinar is exclusively happening on Zoom, and on YouTube we are only going to publish a portion of this webinar, not the entire webinar. It's exclusively for Zoom people and everyone who is here. The entire webinar, if you want to watch later again, you have to download my app, and from there you will be able to get the entire webinar on my app, Ashish Kyal Trading Gurukul. वहां पर मेन्यू के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन है, वो वीडियोस होते हैं, वहां पर आपको ये वेबिनार मिल जाएगा. The reason I do that is because so that we know that I'm focused and we can chat here and we can discuss a lot of things. So आज का जो टॉपिक हमारा है, we are going to look at Neo Wave, we are going to look at Gann cycle, Gann levels, and we are going to see what is the prices looking like. आगे बढ़ने के पहले I'm going to take a very quick poll. I want to know what do you think is the Nifty trend in coming week, and I just want to check with all of you if you are able to what is the trend. क्या लग रहा है यार, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? मैं तो मेरा व्यू शेयर ही करूंगा, चार्ट भी शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या लग रहा है इज व्हाट आई एम आस्किंग. एंड यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करें कि मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखोगे बहुत वोलेटिलिटी है इन अ रेंज, लेकिन वोलेटिलिटी अच्छी खासी है. तो ऐसे में क्या मार्केट वापस अपमूव शुरू कर सकता है कि नहीं, वो देखेंगे. जयंती, ग्रेट टू सी यू. शी इज अ मेंटी आल्सो एंड इट्स ग्रेट टू सी यू हियर अगेन. एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम आल्सो चेकिंग what is the poll suggesting, and it is interesting. Most of the most of the people, I'm ending the poll now guys. Most of the people are expecting markets to actually move up. I'll share the results. 60% लोग expect करें कि markets ऊपर जाएगा और 40% expect करें कि markets यहाँ से नीचे जाएगा. That's a very very interesting scene that we are seeing. लेकिन बहुत ही मजेदार market, बहुत important junction पे है. I'm telling you, if Nifty breaks that level, I'm going to show it across to you as per wave theory, as per कि क्या लग रहा है. अगर निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिल सकता है. अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम टुमारो इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मार्केट. ऐसी वोलेटिलिटी जब होती है ना, ऊपर नीचे दोनों बाजू बुल्स और बैट्स को निकाल देता है, उसके बाद जब ट्रेंड आता है ना, इट्स वन साइडेड ट्रेंड फॉर फ्यू डेज. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव. दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. कौन से डायरेक्शन में, उसके लिए चार्ट देखेंगे, एंड चार्ट पे हम देखेंगे कि कहां पर लग रहा है मार्केट जाएगा यहां से. सो लेट मी कनेक्ट माय पैड, लेट मी जस्ट ड्राइंग पैड, जिससे मैं आपको बता सकूं कि कहां पर लग रहा है. लेट मी जस्ट डू दैट. एंड बिफोर आई मूव ऑन, आई वांट टू नो यार क्या हुआ आज, किसी ने ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया? आई वांट टू इंटरेक्ट विथ यू. आई नीड टू नो अबाउट यू. आई नीड टू नो अबाउट एवरी वन ऑफ यू. नरेंद्र, ग्रेट टू सी यू. आपके टेलीग्राम पे पोस्ट में देखता रहता हूँ. द वे यू ट्रेड, द वे यू मेक मनी is simply amazing, and I'm glad to have you as a mentee in our Gurukul. Narendra, it's always great. सुदर्शन, आपने क्या ट्रेड किया वो बताइए. हमारा आशीर्वाद नहीं, इट्स द मार्केट. प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे. इट्स प्राइस इज जिसका है. ओके, सुदर्शन टू बैंक निफ्टी कॉल.
Jatin trading in Titan, support of breakout. सुदर्शन मेड 5000, क्या बात है। राजू ने क्या ट्रेड किया आज, 19,650 का कॉल एंड पुट सेल किया, लवली। तो पैसा बना कि नहीं राजू उसमें। अमित वानानी ने BTST डिवीज इज बाय द वे गुड वन। आकाश हैज सोल्ड 19,450 पुट, कैरी किया क्या आकाश नेक्स्ट वीक के लिए, कि आज का इंट्राडे ट्रेड था आपका 19,450 का जो पुट आपने ट्रेड किया। ओके, इट वाज सोल्ड टुडे फॉर पोजिशनल ट्रेड, क्या बात है, इंट्राडे ट्रेड। तो चलिए, बहुत अच्छा रिस्क लिया आपने और आपको रिवॉर्ड भी मिला होगा बाय द एंड। एंड सुदर्शन आल्सो मेड प्रॉफिट्स ऑन बोथ साइड्स। अंजलि ने ट्रेंड फ्यूचर, ट्रेंड क्या चला, मैं ईटी नाउ पे था थोड़े टाइम पहले, देख रहे थे ट्रेंड का, अमेजिंग। अक्षता मेड 10 के प्रॉफिट। चलिए, बहुत अच्छा है, सुन के अच्छा लगता है जब आप लोग पैसा बनाते हैं। क्या चाहिए मेंटर को कि यार आपने पैसा बनाया, दैट इज माय सक्सेस, बिकॉज व्हिच मींस द टेक्निक दैट आई एम यूजिंग फॉर ट्रेडिंग, you are doing it and you are able to make money. That is what is required and that is what is helping me to understand. तो आगे बढ़ते हैं, let us now, Ramotar, great to see you also here, and this is going to be our topic on neo wave time cycles and सारी चीजें हम देखेंगे। गैन टाइम नहीं, गैन देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल भी देखेंगे हम। सो लेट मी ओपन अप माय चार्ट फर्स्ट। मैं मेरा चार्ट ओपन करता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एंड देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। योर लेवल्स आर सुपर डुपर, थैंक्स महेश। लेवल वर्क्स लाइक मैजिक, राइट टाइम्स। मैं खुद भी सोचता हूँ यार क्या चलता है वो लेवल्स, कैसे ऐसे होता है कि आरबीआई का पॉलिसी है, रेट है, हाइक किया, कट किया, जो भी कुछ किया, लेकिन यार वो लेवल्स चलते हैं मार्केट में। एंड दैट इज रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसेस, राइट, दैट लेवल्स प्राइसेस रिस्पेक्ट सो वेल, दैट्स वंडरफुल। and let me just share my screen now. Okay, are you able to see my screen? No, this is कहाँ गया मेरा चार्ट, मेरा ट्विटर हैंडल ओपन हो गया। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंश्योर आई कीप शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ट्विटर। यहाँ पर आ गए हम निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप देखोगे आज की डेली कैंडल है, आर यू एबल टू सी, एवरीवन एबल टू सी दिस चार्ट? Nifty daily candle, if you are looking at this Nifty daily candle, you can see that the high of this candle, okay, ये जो कैंडल की हाई है is here and the low is here, and आज कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों। पूरे दिन में मार्केट भले ही it went up, it came down, it went up, it came down, it formed an inside candle, Vidyut, it's not an outside candle, okay. It formed an inside candle. Inside candle का मतलब क्या होता है? The high is within the prior period high and the low is within the prior period low. That is an inside candle, which means despite of volatility, nothing changed, nothing happened, and which means that if Nifty today being an event, the high and the low is very important. If Nifty breaks above the high of today, what is the high of today? The high of today is 19,623. थोड़ा सा लीवे अगर हम देंगे 19,630. And guys, do not forget, if you are watching this on YouTube as a limited part, do not forget to subscribe, like and share, because ऐसे वीडियोस मैं प्रोड्यूस करते रहूंगा। अगर आपके कमेंट्स भी आते रहेंगे तो मुझे पता रहेगा यार you are enjoying this and I'll produce more such videos. So अगर आप देखेंगे यहाँ पर, let me draw that, this is the level. थोड़ा लीवे देखें, 19,630 is important and 19,490 is crucial. 630 से थोड़ा लीवे दिया तो 650 भी आप बोल सकते हो। अगर आपने सोचा होगा, ट्विटर मॉर्निंग में दो लेवल मैंने दिए थे, 19,650 के आसपास ब्रेक होना चाहिए या 19,490 को नीचे ब्रेक करना चाहिए। आज का लो क्या था निफ्टी को? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लो ऑफ निफ्टी? लो ऑफ निफ्टी वाज 19,495. कैन यू थिंक कैसे पॉसिबल है इतना प्रिसाइजली ये लेवल्स काम करता है डिस्पाइट ऑफ द इवेंट? है ना सोचने वाली बात। इट इज मैजिक, द वे इट फंक्शंस इज सिंपली मैजिक. So it's not me, it's the market that is magician.
So people call me as a magician. No, it's the market that is magician. So that's how it works. That's how precisely it works. And that is very, very important. So over here, if we look at the entire movement of the market, we can clearly see that the range is this for now. Now I'm going to go on an hourly chart. Okay, I'm going on an hourly chart. And I'm going to show you what happened during the range. In this range of the market, let me just clear off my screen. यहां पर अगर आप देखेंगे, it looks a contraction. दिख रहा है आपको? ना ऊपर गया, ना नीचे गया. This is like a contraction. The entire market moved between this high and between this low. It's a contraction. It's a triangle pattern that we are seeing here, which is currently forming. So Nifty is currently forming triangle pattern. Okay. And यहाँ पर अगर हम यहां से चलते हैं, देखते हैं नियो वेव पर्सपेक्टिव पे क्या हो रहा है. नियो वेव पर्सपेक्टिव से we will start seeing from the bottom of the chart. ठीक है, let us just start seeing from the bottom of the chart. What is from the neo wave perspective, how the market looks to be behaving from a neo wave, and trust me, this is one of the best way in which you can possibly see the market and look at it. So let me just hide so that आपको पूरा chart visible हो. From a neo wave, which I call as the GPS of the market. If you're looking at it, we are starting the count from here. Are you able to hear me, every one of you? मेरी आवाज आ रही है? Someone is feeling कि आवाज low है. Overall, okay, awesome. यहाँ से wave A था, B, C, D. Then we completed wave E up, which was I think around this level. We have wave F, and this completed wave G. इसके बाद में हमने एक X wave बनाया. So ये बनता है, ये जो पैटर्न है, this is from neo wave pattern. This is not from Elliott wave perspective. It is neo wave. Okay. And neo wave में काफी जन पूछते कि सर neo wave और Elliott wave में क्या फर्क है? So we can clearly say that from a neo wave perspective, you can see. I'm hiding my video because you will not be able to see the chart. So this is a Nifty neo wave analysis that we are doing right now. So from Nifty neo wave analysis, we are right now in a very, very important area. कहां पर? यहां पर wave A था. Then we are right now moving in the form of B wave. This is as per neo wave, where this is B wave. इस B wave के अंदर भी अगर आप देखेंगे, I'm going to change the color. We are moving in the form of A, B, C, D, E, F, and this is wave G. Okay, which is going on right now. तो फिलहाल तो wave G बन रहा है. So I will not say कि B complete हो गया. As of now, I will mention that possible है कि wave G फिलहाल ongoing है या complete हो गया. We will yet to see. So move above this, which is 19,650, will confirm that this entire trend in the form of wave B is over, and we are then going to resume the up move in the form of wave C. This will be wave C, and this is going to be forming a classic move on the upside. Is it clear? So ये जो हम कर रहे हैं Nifty neo wave analysis, we are right now at the cusp of a breakout. Okay, and cusp of a breakout इसका मतलब होता है यहाँ पर एक बहुत strong move आना चाहिए. So मैं आपको explain करूंगा. Just look at it. So now what we require is move above 19,630, say 19,650 will provide opportunity for bulls. Provide, क्योंकि ऐसी opportunity बहुत बार नहीं मिलती है दोस्तों, ये बहुत ही classic है. Provide opportunity for going long. Why?
व्हाई डू यू थिंक? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो डेली कैंडल का जो बायस है वो अभी भी बुलिश है। आई वाज एक्सप्लेनिंग माय मेंटीज आल्सो यस्टरडे एंड यहाँ पर अगर डेली कैंडल का बायस पॉजिटिव है, डेली कैंडल का बायस यू नो गाइस, what is the daily candle, how to look at daily candle and what is the bias and all of those things, are you aware about it? And वो अभी अगर आपको नहीं पता मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि थ्री कैंडल थियरी है ऑफ कोर्स मनोहर, एग्जैक्टली ये थ्री कैंडल थियरी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। द थ्री कैंडल थियरी के बेसिस पे विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ इज द डेली बायस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ नहीं वो बता पाऊंगा एंड बट पीपल आर यू अवेयर अबाउट इट? पता है, ओके यू गॉट इट राइट। यहाँ पर टू स्टेज कंफर्मेशन एक टेक्निक होती है दोस्तों। टू स्टेज कंफर्मेशन क्या होता है? टू स्टेज कंफर्मेशन होता है नियो वेव के कॉन्सेप्ट में कि अगर लास्ट फॉलिंग सेगमेंट है, लास्ट फॉलिंग सेगमेंट को अगर मार्केट ने फास्टर रिट्रेस कर दिया, देन आई नो दैट द डाउन मूव इज ओवर एंड द अप मूव हैज स्टार्टेड। दैट्स द एम। अब हुआ क्या, कल अच्छा खासा एक मूव आया था हमारे इधर अप मूव, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आज उसको पूरा ऑलमोस्ट पूरा रिट्रेस कर दिया मार्केट। तो मतलब अपमूव शुरू नहीं हुआ। अभी जो पैटर्न बन रहा है वो लग रहा है ट्रायंगल पैटर्न। अगर 19630 से 19650 ब्रेक होता है, इट विल गिव अ क्लासिक अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग ऑन द लॉन्ग साइड। क्लियर है? आर यू विथ मी? एंड दैट्स द लेवल दैट आई एम लुकिंग एट इट। इसके साथ में अगर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दिया, सो आई एम गोइंग टू हाइड माई सेल्फ जस्ट टू शो यू अ ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अगर मैंने कनेक्ट किया ये लो के साथ में, यहाँ पर ये एफ के लो के साथ में, मार्केट ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही विपसॉ कर रहा है। दिख रहा है आपको? इसके ऊपर नीचे मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्प पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर ये लेवल पे से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलेगी वन साइड ट्रेंड के लिए। ऊपर में 19,800 पहला पड़ा हुआ है, पहला, उसके बाद दूसरा होगा आगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मैं कह रहा हूं? आर यू विथ मी? समझ में आया? लेकिन हमें दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसका मतलब 19,460 का लेवल है नीचे में, अगर 19,460 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो बी वेव जो है वो अभी भी ऑन गोइंग है एंड ये जो जी लेग है, जी लेग विल देन come much more lower. So it is very crucial for prices to protect this level of 19,460. इसको समझने के लिए what we have to do is now we will have to go down on a 15 minutes time frame. तो अगर हम 15 minutes time frame को नियो वेव के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, if I go on a 15 minutes time frame and if I apply neo wave on this chart, I can see the internal counts of this ongoing pattern जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। The internal counts of this ongoing pattern can be, we completed wave A here, completed B here, C here, D here. This wave E का साथ प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू C, तो थोड़ा सा रिलक्टेंट है कि भाई यहाँ पर जो हम मार्क करें क्या वो सही है। लेकिन अगर आप F देखोगे, गाइडलाइन क्या है दोस्तों? गाइडलाइन ये है कि F will tend towards equality with B. Can you tell me what is the guideline? G will tend towards equality with A and E will tend towards equality with C. This can be time and price, time or price. ठीक है? This is neo wave concepts I am explaining you on. टाइम और प्राइस के मतलब हो गया कि वेव E अगर यहां पर आप देखोगे which is going to be compared to C leg. ओके, एफ आप देखोगे इट इज कंपेयर टू बी लेग। ठीक है, जी अगर आप देखोगे इट्स लाइक अ ट्राइंगल विच इज फॉर्मिंग, बट जी कैन ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स इक्वालिटी विथ ए।
तो ये रूल्ड आउट नहीं है कि जी कंप्लीट नहीं हुआ है, जी माइट टेक टाइम। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ब्रेक जैसे ही होगा, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी बॉस, टाइम टू गो एंड बाय द मार्केट, ओके, एंड दिस टाइम गो एग्रेसिव। अगर निफ्टी ने ये लो ब्रेक कर दिया, ये वाला लेवल 19470 19460, इसका मतलब हुआ नीचे जाएंगे जी के फॉर्म में और फिर हम वापस से ऊपर आएंगे। सो दैट इज हाउ यू लुक एट नियो वे। Also, the breakout that happens on the upside should be sharp and fast. So there is something known as a two-stage confirmation. Two-stage confirmation means that prices should break above this high in faster time. That is the two-stage confirmation that we have to look at it. So what I am showing you right now is the internal structure of the wave theory. Any questions on neo wave expectation of the market? Many of you are asking me what is the neo wave outlook, and this is what I thought I'll just share it across with every one of you. ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, गैन पे चले। Shall we look at Gann analysis and look at what is the Gann levels are suggesting in market? So I have a lot of layouts, I keep doing a lot of things, and we will now go on and look at. So agar aap ye dekhiye, if you are looking at this chart, it's a very clear chart which shows what should be the strategy, and it's an amazing triangle pattern. So after a sharp rise, a sharp fall usually results into triangle pattern. That is what we call as a triangle pattern. And this triangle pattern usually leads into sideways action, and people get trapped on either side. हुआ आपके साथ आज ऐसा कुछ? Okay, sideways action and people get trapped on either side. So that's the problem. And right now what I'm going to do is I'm going to come across Vinay Kumar. You were there yesterday for the session that we had by any chance, Vinay, at 5? Okay. आपके हेमंत के साथ ऐसा हुआ आज? Okay. Let me now go on to the Gann analysis. तो मैं आपको Gann के चार्ट पे लेके चलता हूँ, and let us look at from the Gann perspective what we are seeing in the market. So I'm going to go on the Gann chart, and I'm looking at this. I'm going to leave the screen here, leave the page, and चलते हैं निफ्टी के Gann levels पे. Okay, so now we are entering into the world of Gann. एंड देखते हैं क्या लेवल्स है, क्या मार्क किया है, कहाँ मार्केट घूम रहा है। ये वीकली चार्ट है, मैं डेली पे चलता हूँ, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। दिख रहा है आपको Gann लेवल्स गाइस? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन हियर? So if you're looking at this Nifty Gann levels is working like a magnet to provide strong support to prices. Can you see that? And are you able to see? Nifty Gann levels is working like a magnet to provide strong support to prices. And we bounced back even this time from 19,391. 19,391 से ही हमने बाउंस बैक किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल। ओके, एंड यहां से ट्रेड सेटअप कैसे मिलेगा हमें? दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ट्रेड सेटअप लेने के लिए Gann लेवल्स कैसे डिफाइन हुए वो सब डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूं। What I am trying to tell you is that if you look at this chart, if you are looking at this chart, you can see that prices found resistance at the upper end of the level, came down here. So let me just move myself down. यहाँ पर अगर आप देखेंगे prices found resistance at the जो टॉप बना वो अपर Gann पे बना। यहाँ रुका कहाँ पर वो देखो दोस्तों, कि रुका भी आके prices exactly at the lower end of the level which is at 19,391. Exactly वहाँ it stopped there, and we are again seeing some kind of a behavior which is trying to pull prices on the upside. Are you able to see that? Is it clear everyone? So यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा? अगर निफ्टी वापस से इस लेवल को ब्रेक करेगा, पहला पड़ाव 19,780 19,800, दूसरा पड़ाव
Gann levels. Wave technique, अगर मैं यहीं पे wave को combine करूं, shall I do that again for you all? What is the wave count that I am looking at it right now? The overall count on the wave perspective is, this is wave A that we looking at it. This is on a daily time frame chart. Wave B, C, D, we had E, F, we had G here. यहाँ पर X हो गया. This is wave A that we are looking at. And this is wave B currently still going on, not yet over, because ये rise lower है. ये fall took 2 candles, rise took so many candles, still not retraced back above this level, which means B wave is not yet over. So दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, B wave अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कल जाके मार्केट गिरेगा तो बोलोगे आपने तो बोला मार्केट बुलिश है. I am bullish. I am going to be super bullish. If Nifty manages to take out today's high, I'm going to go very aggressive. वैसा है. Are you with me? Every one of you. रामतार बोले सर आपकी हेल्थ थोड़ी ढीली लग रही है. Because I've been speaking since yesterday for so many places, so many events, तो इसलिए थोड़ा सा exhaustion है, लेकिन एनर्जी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए. So guys, are you enjoying this session or not? Make it worthwhile, because ये जो मैं वेबिनार करता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ. दिस इज फॉर यू ऑल. आई कंडक्ट so that you are on the right track, you are able to make money, so that it works for you, because it is working for me. And that is the reason I am doing these webinars. And if you do not interact, if you do not like this, then क्या point है यार मेरी इतनी एनर्जी देने का? क्योंकि अगर आप सीख पा रहे, ट्रेड कर पा रहे, तो ही तो मजा है इस मार्केट में रहने का. तो ऐसा है दोस्तों. साथ ही में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा. सैटरडे को अगर आप मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. ओके, डॉक्टर शाहू सेन इज गिविंग मी अ रोज. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. सैटरडे को एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करते हैं दोस्तों. चलो ये सैटरडे को 11 बजे 10 मिनट पहले आना, क्योंकि एट 11 AM हम हाउसफुल हो जाते हैं, आप एंटर नहीं कर पाओगे. दिस सैटरडे आई एम गोइंग टू रिवील अगेन एलियट वेव एनालिसिस. You can simply click on the link. अभी मेरी कलीग ने शेयर किया है, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर पाओगे आप. सैटरडे 2 घंटे का वेबिनार होगा. इट्स एन आई ओपनिंग सेशन फॉर एवरी वन ऑफ यू. इट विल चेंज द वे यू एवर सी द मार्केट. इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड यू नीड टू एंश्योर दैट आप मेरे साथ में रहो सैटरडे को. सो क्या आप सैटरडे आने वाले हैं? रामतार इज सेइंग दैट now it's better, roars like a lion. हो क्या गया था, मैंने सोचा यार आज थोड़ी कम वॉल्यूम में बोलूं, क्योंकि since because I've been speaking for so long, so many events, कल mentorship session भी था, I wanted to relax my throat a bit. लेकिन यार अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा ऐसा करके. Okay, so you are going to be there on Saturday. I can see Leenu, Gopal, Suresh, every one of you. Amazing. तो हम क्या करेंगे, हम कैंडलस्टिक देखेंगे, एलियट वेव के बारे में देखेंगे. एलियट वेव, नियो वेव नहीं. सो एलियट वेव और नियो वेव में थोड़ा फर्क है दोस्तों. नियो वेव जो है, इट्स अ मोर एडवांस्ड लेवल ऑफ एलियट वेव. इट टेल्स यू हाउ द मार्केट्स कैन बिहेव इन अ मच हायर प्रेडिक्टेबिलिटी. सो नियो वेव इज फैंटास्टिक and it's amazing. But Elliott wave is also super. So we will, but Elliott wave has only 3 rules. Neo wave has nearly around 15 rules to define a pattern. And ये जो pattern आप देख रहे हैं, this pattern is diametric pattern, which is a 7 leg correction. So basis of the GPS, where are we right now? Let me draw the GPS ideal chart right now. Where are we on the GPS of the market? And Ramatar, you made me again very energetic. By the way, with your comment, I just thought, yes यार, लो वॉल्यूम पे बात करके मजा नहीं आ रहा. तो चलते हैं यहाँ पर. कहाँ पर है हम? A B C D E F G करके कंप्लीट किया हमने. And this is I'm showing an ideal chart as per the GPS of the market. After the G is over, we got an X wave, which was here. After the X, we got an A wave, which is here. Right now, where we are in the form of a B wave. But ये B wave ने A को almost retrace कर दिया, मतलब ये zigzag नहीं बने. So this can be either a flat or a triangle or a diametric. B wave has taken more time than wave A, which means a high possibility it will form a flat pattern, which means this is going to be a C wave in an impulsive pattern. So where are we right now? We are right now at this
point, and that's how I am looking at the market. हम कहाँ पर है अभी? We are here. So this is where the GPS is suggesting we are as of now. Once this B wave is over, we will have short-term opportunity to ride the C leg. That's how I'm looking at the market. लेकिन दोस्तों, अगर निफ्टी ने ये लो ब्रेक कर दिया, if it breaks 19,460 followed by 19,390, boss, I will be super bearish. Because if that happens, I will be super bearish. So लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब टॉप यहां पर बन चुका है for coming months. Months I am talking about, not even weeks. For coming months, the top is formed if this low of 19,390 breaks, and the target will open up for 18,838. That's what we have to watch. That's what important level is. So I'm not talking both sides. I am talking from the perspective of price. Bhav Bhagwan che. Price is God. If price is break, I change my stand. I don't care. Doesn't matter what everyone is thinking. I will change my stand if prices break the low. That's the bottom line. And होना ही चाहिए ना यार, पता तो हो कभी हम bullish से bearish होने चाहिए. Majority of the trader, if they are bullish, they will be bullish even if Nifty falls by 2,000 points. मेरा ऐसा नहीं है. If Nifty breaks the level, I will turn bearish. क्या फर्क पड़ता है? पैसा बनाने से मतलब है नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, बल्कि बेयर मार्केट में पैसा बनाना बहुत मजा आता है. आपको आता है कि नहीं? इतना फास्ट मूव होता है. The bear market is actually fun for trading because market moves very fast. That's the fun of bear market. But for now, it's still a bull market. That's what I'm looking at it, and I'm keeping a close watch on my Gann level of 19,391. Any questions, guys? Is it interesting what we did today? Gravity works, yes, but gravity should not work very often. Otherwise, prices will not go anywhere. So that's why the gravity should work only when we are able to capture a trend and the move. That is very crucial. Awesome, guys. So this is what the power of wave theory is. And if you combine with neo wave, do you want to see what is happening with the open interest chart? लेकिन आज expiry हो गई, तो open interest को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी. देख ही लेते फिर भी. आज open interest में हुआ क्या? अगर आप देखेंगे, let me just go and check here. बहुत ही quickly मेरा open interest profile मैं open कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में. Give me a second and we will see even on open interest what is the overall trend looking like on the profile. एक्सपायरी के कारण क्या हुआ होगा ना, वो डेटा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. तो फिर भी देख लेते कि कहां पर मेजर प्लेयर्स की एक्टिविटी हो रही है, कहां पर उन्होंने पोजीशंस नेक्स्ट वीक के लिए क्रिएट किया है. लेट अस लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. क्या 19,500 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, नहीं करेगा, वो ओपन इंटरेस्ट से ही पता चलता है. Shall we move on to and check open interest? Are you having some time? Okay. Let me just open up the open interest chart over here. So I'm going to share my chart of open interest. यहाँ पर आते हैं. This is the chart of open interest. यहाँ पर I'm going to change something today. What am I going to change? What am I going to change? Is I'm going to look at not a cumulative open interest, क्योंकि एक्सपायरी हो गई है, तो आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो करेक्ट नहीं है, तो मैं इधर क्यूमुलेटिव निकाल दूंगा. ठीक है, क्यूमुलेटिव निकाल दिया. अभी ये जो ओपन इंटरेस्ट मिलेगा मुझे इस डे का ओपन इंटरेस्ट देखना है जो 17 अगस्त का है. ये वाला चार्ट देखना है. आपको दिख रहा है मेरा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट? ओके. सो 17 अगस्त का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखना है. तो प्राइस को मैं यहाँ ले आता हूँ. ओके, मूव नहीं हो रहा, चलेगा, यहीं से देखते हैं. सो 19,600 पे क्या हो रहा है देखिए. If you're looking at 19,600, we have a huge build up on 19,600 call side. Wow. यहाँ पर लेकिन 19,500 पे भी बिल्डअप है. इसका मतलब बुल्स के लिए सी ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है. इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे. ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल कहते हैं, इसे कहते हैं OI प्रोफाइल. We will be doing this discussion in very detailed fashion in our option trading using technical analysis program. So open interest profile पे अगर हम देखेंगे, अगर आप समझते हो कि 19,600 ये नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है, ठीक है.
So what we can say that Nifty 19600 calls for next week expiry. Okay, next week expiry is still showing sharp rise. So bulls have to break which level? Can you tell me? Bulls have to break which level? I am asking you. You need to think before you answer. Huh? Answer इतना easy होता तो मैं पूछता भी नहीं. Okay, answer is not so easy. So I am asking you, bulls have to break. Fantastic, Uday. Bulls have to break 19,630 levels so that short covering happens. Okay, that is the reason. And that is the reason. That is how you have to look at it. Options के लिए बहुत जरूरी है ये देखना. क्लियर है? क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 19630 का लेवल ब्रेक करना होगा. 19630 का लेवल ब्रेक करने के लिए निफ्टी को 630 तक जाना होगा. देन वी विल से दैट देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर प्राइसेस टू मूव अप एंड गो ऑन द अपसाइड. एनी डाउट्स और क्वेश्चंस ऑन दिस? नीचे का जो लेवल है हम देख रहे हैं यहाँ पे, विच इज एट दिस जोन. So it's very, very crucial that we keep a watch on these levels, and basis of this breakout, we will be trading in that direction. So that's how you have to trade. This is open interest profile. इसके बारे में मैं अभी आपको explain नहीं कर रहा हूँ दोस्तों. I would like to ask you, do you want to be a part of learning this option trading using open interest profile along with KST indicator, Bollinger Bands breakout technique, volume profile, and wave theory? Do you want to be a part of that? If yes, then you need to be a part of Become Market Wizard, which is BMW program. And Hemant, you are a BMW student. Awesome, guys. Glad to know that. Manor 19630 इसीलिए 600 पे हर्डल है. 19630 के ऊपर कॉल सेलर्स पैनिक होंगे, तो हमने उतना लीवे दे दिया 19630 तक का. और वो लेवल हमारा आज का हाई, कल का हाई भी उसके पास में ही है. इसी के लिए मार्केट गैप अप होगा तो देखेंगे ना यार, पहले होने तो दो. Ramni wants to be knowledgeable as me. You will be, Ramni, for sure. There is no second thought. It's you are on the mentorship group, so you don't really have to worry about anything. So guys, my colleague will share the BMW link. You can be a part of this BMW program, which is happening on KST indicator is awesome. Biswajit is saying, yes, indeed. I will be giving you these KST indicators, trade setups, all of those things clearly. So अगर आपकी टाइम परमिट नहीं करिए, ऑफिस परमिट नहीं करिए, रिकॉर्डिंग्स भी होगी जो आप देख सकते हो. Boss, you can't afford to miss this opportunity. You need to be a part of this, and you can simply register on the link which is given here, which is BMW event. वहां आप रजिस्टर कर सकते हो. The early bird offer is ending today. So दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अर्ली बर्ड का जो ऑफर है वो आज खत्म हो रहा है. So you have to be with me on this wonderful learning series of BMW, which is comprises of both Master of Waves and option trading program. Option trading is going to happen on 19th and 20th of August. I'll just share my screen here, and you can see all the details, or you can click on the link that I have shared across. And it will be simply amazing. If you are watching this on YouTube later, live तो है नहीं YouTube पे, तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, so that you keep getting alerts for something like that. Sudarshan is saying trading is fun when you learn. Absolutely, and it is more fun and entertaining if you are with me, Sudarshan. So that's great. So this is the offer price is mentioned here, which will be over from tomorrow. So ensure you are taking care of that. So BMW is comprised of option trading. नीचे आप scroll करेंगे देख सकते हैं, और it will be a part of Master of Waves. So combining both together is called BMW program. I'm taking a very quick poll to understand which path you want to select for your financial freedom. The path to financial freedom. That's the question that I'm asking you all. And यहाँ पर आपके सामने है. So answer करिए दोस्तों. साथ ही में I'll take a few questions that you might have with respect to wave theory, with respect to learning about options, with respect to markets, with respect to you, anything, any questions, I'm open.
and do ensure you share across. लेकिन अगर आपने वेव थियरी सीखा, साथ में अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, वो यार सुपर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब आज तक का बेस्ट कॉम्बिनेशन is what I have looked at it. Hemant, you want to join mentorship program? Lovely, you can be a part of that. Okay, so there is a question here. Sir, what is the neo wave suggesting for Bank Nifty? See, Bank Nifty का जो आउटलुक है वो निफ्टी के साथ ही चलता है मोस्टली. सो मैं निफ्टी पे देख रहा हूँ. निफ्टी पे if Nifty breaks that 19630 level, I think Bank Nifty will follow. If that happens, if Nifty manages to break below 19460, then I am bearish. And tomorrow is going to be super. And in options, you can do so many things. If Nifty is stuck in a range, you can do. If in the morning, if you check, I mentioned sell options. I mentioned in the morning sell options and made money in selling options on either side, right? Because Nifty was range bound. If I'm looking at buying the market like 19630, then I will look for buying opportunity in options. I can buy call options because if 19630, 650 breaks, then a good opportunity will happen. So then I will buy options with a strike price and I will sell deep out of the money option so that I make out the most of these combination. So options combination with wave theory is the best way that I have come across to trade the market. Okay, there is a question, Neo Wave plus OTA, no webinar. I didn't get it. Neo Wave plus OTA is what? So option trading is in technical analysis is a 2 days program, which is on 19-20th August, which is next weekend. And Master of Waves is going to happen in 16-17 September. And then both combined is what, and in videos and recordings will be given to you. So don't worry about that. So that's why saying I only make loss when I bypass your teaching. So don't bypass. That's the rule, right? Stick with the rule. I keep telling my mentees, keep the process, keep doing it 100 times, keep doing it. And then you will be able to make money for sure, because process है, loss होगा, पैसा जाएगा. लेकिन जब loss हो रहा है, keep it less. When making money, keep it more. Net, you will make money. That's how it should be. Okay. There is another question here, sir. If I register, will I get the bonus videos which I committed? Yes, you will get the bonus videos, so don't worry about it. All the bonuses. So you will get 10 bonus videos, of course. You will get access to Elliott Wave videos if you're registering today. You will get access to the research report for 15 days. So you will be getting that plus live event, pre-session video of options. Even if you are fresher, does not matter. It does not matter. Okay, guys, I think that's a classic of all of you being here. I love talking to you all. Thank you very much for joining in. And people on YouTube, if you want to see the complete telecast, do download the app Ashish Kyal Trading Gurukul and see you on Saturday, guys. Do not forget, Saturday, 11 a.m. I'm going to be there. Join me 10 minutes prior. It's going to be live on Zoom platform. The link will be shared with you. You just have to register on that. If I'm a fresher, Deepak has a question, what would you suggest for me? You can start with BMW is what I would suggest. I would rather suggest mentorship, but it's still fine. You can start with BMW even if you are a fresher, because we will be giving you these videos before the session that will bring you up to the mark, and live session jo hoga hamara, which is also going to be recorded. You will get that recording also, so you can refer it even later on. So my suggestion to you, Deepak, will be you should be a part of this life-changing BMW event. Mohammed has a question. I do wrong entry and wrong exit, waiting on losses. Which course will help me on this topic? See, wrong entry exit kab hota hai? When we do not know the market and levels where we need to enter, the signals, as I said. So you need to be a part of, I would suggest BMW program. If not BMW, then you can just be a part of option trading in case you want just options. You don't want to forecast market. That wave theory provides you with. My suggestion, Mohammed, will be you should be a part of BMW. It will help you in taking a correct entry. We will give you a complete trade setup that is very much exactly where you should buy the market and where you should exit. I'll give you a trade setup with a buy-sell strategy so that you do not commit that blunder or mistake of entering at the wrong time.
Does it answer your question, Mohammed? Okay, awesome. Okay, there is one more question. Sir, will I be able to do it? दिमाग में आता क्या है ना कि यार इन्होंने तो कर लिया लेकिन मैं केपेबल हूं कि नहीं. That's the question people have. If you trust me, I will make it happen for you. I will give you trade setup that does not require lot of things. Neo wave when you're doing, it requires practice. I'm going to be honest with you. See, I'm the guy who is blunt and upfront. I don't care. If market is up and I am wrong, I am wrong. How does it matter? Similarly, Neo wave when you're doing, you need practice after Neo wave. But what we do in option trading, you can apply it from the very next day because those trade setups are signal based. KST, bands, Ichimoku cloud, clearly option chain, volume profile, हम एनालाइज करेंगे साथ में स्ट्रैटेजी बनाएंगे स्ट्रैटेजी का and you don't have to purchase any software, no minimum capital required for option trading program. So strategy को कैसे deploy करना है मैं आपको सिखाऊंगा and you can do that from the very next day. That is option trading. In wave theory, you need to practice, you need to see, you need to learn, and you can eventually. But if you know once an Elliottian, lifetime an Elliottian. That's how the Elliott wave works. So that's how it works. Okay, does that answer your question? Okay, great guys. So glad to get all of you over here. Thank you very much for joining in. This is Ashish Kyal signing off and wonderful interacting with you all. It's always energetic when I speak with you all, and ensure if you are seeing this on YouTube later on, you might want to be ensuring you are subscribing and liking and sharing the channel. And it's always wonderful. Great to get you always here, Lino and Hemant and everyone. Thank you. Have a wonderful day. Become a wonderful trader.